Hi guys, welcome to Hamid's Fun Learning Hub. So from 1st April 25 TDS के ऊपर बहुत सारी changes है. TDS limits, TDS rates, TDS sections, new TDS sections. So आज के वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे. So without wasting any time, let's start guys. So TDS changes from 1st April 25. First, TDS rate reduction under section 194 LBC. Okay, so ये जो changes budget 2025 में आया था. Under section 194 LBC, securitization trust must deduct TDS on income paid to resident investors. अभी जो TDS रेट है फॉर इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के ऊपर 25% TDS डिडक्ट होता है एंड फॉर अदर पर्सन दैट मीन्स कंपनीज फर्म्स के लिए 30% TDS डिडक्ट होता है फॉर सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट के ऊपर. ओके, नाउ फ्रॉम 1st April 25 से TDS rate will be reduced to 10% for all resident investors as the sector is now well regulated. Okay, so from 1st April 25 से 25% and 30% TDS रेट नहीं रहेगा. सबके लिए 10% रेट में TDS कटना पड़ेगा. ओके, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए एन इंडिविजुअल अर्न्स 1 lakh फ्रॉम ए सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट बिफोर 1st April 25. 1 lakh का वो 25% TDS कटता था which is 25,000, but from 1st April 25 10% रेट में TDS कटेगा which is 10,000. ओके, इसका बेनिफिट क्या होगा? मोर कैश इन हैंड फॉर इन्वेस्टर्स. कम TDS डिडक्ट होगा तो मोर कैश इन हैंड रहेगा इन्वेस्टर का. रिड्यूस नीड फॉर रिफंड क्लेम्स, रिफंड क्लेम कम होगा एंड इनकरेजेस इन्वेस्टमेंट इन द सिक्योरिटाइजेशन सेक्टर. ओके, तो ये सेक्शन 194 LBC है जो आपका फ्रॉम 1st April 25 से TDS रेट हो जाएगा 10%. Next is removal of higher TDS or TCS for non-filers effective from 1st April 25. Section 206 AB and 206 CCA दो सेक्शन हैं जिसमें सेक्शन 206 AB जो है डिडक्शन ऑफ TDS at higher rate if payee or deductee hasn't filed their income tax return. Okay, अगर डिडक्टी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता था देन सेक्शन अंडर सेक्शन 206 AB में TDS का जो रेट है वो हायर रेट में TDS करता था. एंड सेक्शन 206 CCA फॉर TCS कलेक्शन ऑफ TCS एट हायर रेट फॉर नॉन फाइलर्स ऑफ कलेक्टर्स. ठीक है, तो इसमें इश्यू क्या होता था? डिडक्टर्स एंड कलेक्टर्स फेस डिफिकल्टी वेरीफाइंग ITR फाइलिंग रिटर्न. ओके, सो ये वेरीफाई करना पॉसिबल नहीं होता था डिडक्टर को और कलेक्टर को वेदर द डिडक्टी हैज फाइल्ड देयर ITR रिटर्न और नॉट. ओके, सो हायर TDS और TCS रेट wrongly applied होता था. कैश फ्लो issues for taxpayers and increased compliance burden. That's why from 1st April 25 से both section 206 AB and section 206 CCA will be removed. Okay, so simplifying the TDS TCS process. So TDS और TCS का जो दो सेक्शन था सेक्शन 206 AB and section 206 CCA फ्रॉम 1st April 25 से रिमूव हो जाएगा. ओके, अगर कोई डिडक्टी और कलेक्टी प्रीवियस ईयर में ITR रिटर्न फाइल नहीं करता था तो उसके लिए सेम रेट में TDS काटेगा. ओके, कोई हायर रेट एप्लीकेबल नहीं होगा. फॉर एग्जांपल from 1st April before 1st April 25 Mr. Raj did not file ITR, so TDS on his income is deducted at 20% instead of normal 10% under section 206 AB. Okay, so up from 1st April 25 से क्या होगा? Even if Mr. Raj has not filed ITR, TDS will be deducted at normal rate which is 10%. So no higher rate due to non-filing. Okay guys? Section 194T. So a new section I have TDS on payment by firm to partner applicable from 1st April 25. Okay, so until now payments made by a partnership firm or LLP to its partners were not subject to TDS as per section 40B of the Income Tax Act. So now current scenario में partnership firm और LLP
उसका जो पार्टनर है, पार्टनर का ऊपर कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होता है। द यूनियन बजट 2024 introduced section 194T, making certain payments to partners liable for TDS at the rate 10% if the total payment exceeds 20,000 in a financial year. Okay, so अगर कोई पार्टनर का जो पेमेंट होता है, पेमेंट अगर 20,000 का एक्सीड होगा, देन पार्टनरशिप फॉर्म और एलएलपी को 10% रेट में टीडीएस काटना पड़ेगा अंडर सेक्शन 194T। इसके अंदर कौन 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 सा पेमेंट कवर होगा? एक है पार्टनर का जो सैलरी पेमेंट, रेमुनरेशन, कमीशन, बोनस एंड इंटरेस्ट ऑन लोन और कैपिटल अकाउंट। ओके, TDS applicable only if payment exceeds 20,000 in a financial year, rate होगा 10% and applicable होगा from 1st April 25। Let me take an example to understand. XYZ company is a partnership firm with two partners A and B. So during 25-26, the firm makes the following payments to partner A. Remuneration 1 lakh pay करते हैं and interest on capital 30,000. So total payment is 1,30,000. So since the aggregate payment exceeds 20,000, then under section 194T is applicable होगा and 10% rate में TDS कटेगा on 1,30,000, then 13,000 आपको TDS कटेगा. So 1,30,000 से 13,000 TDS डिडक्ट करके ले सबको पेमेंट होगा. So 1,17,000 पार्टनर ए को पेमेंट करेगा. ओके, सो द फर्म मस्ट डिडक्ट 13,000 एंड ये जो टीडीएस डिडक्ट हो, ये जो टीडीएस 13,000 डिडक्ट होगा, ये जो ड्यू डेट है टीडीएस रिटर्न, जो ड्यू डेट है टीडीएस पेमेंट ड्यू डेट के अंदर पे करना पड़ेगा एंड ऑल्सो TDS return फाइल करना है अंडर सेक्शन 26Q एंड ऑल्सो इश्यू TDS सर्टिफिकेट फॉर्म 16A टू पार्टनर ए. ठीक है, सो इसके लिए क्या होगा, ये जो TDS कटेगा इसके लिए इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा प्रैक्टिकल फील्ड में? कैश फ्लो इम्पैक्ट क्या है? पार्टनर्स विल रिसीव लेजर इन हैंड एज 10% TDS विल बी डिडक्टेड. Compliance burden, firms need to track partners payment, ensure timely TDS reduction and deposit and file TDS return. Timely closure of books, since remuneration is often based on profits, so firms may need to finalize accounts earlier, especially for TDS reduction due to 30th April for the March quarter. ठीक है, तो यहाँ पर कुछ सेक्शन है जिसका फ्रॉम 1st April 25 से जो थ्रेशोल्ड लिमिट चेंज हो गया. ओके, थ्रेशोल्ड लिमिट इसका चेंज हो गया. सो फर्स्ट जो सेक्शन है सेक्शन 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज. करेंट जो थ्रेशोल्ड है, करेंट कोई थ्रेशोल्ड नहीं है. फ्रॉम 1st April 25 से 10,000 हो जाएगा थ्रेशोल्ड लिमिट. सेक्शन 194A इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज. फॉर सीनियर सिटीजन करेंट जो थ्रेशोल्ड है सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 एंड 40,000 फॉर अदर्स, दैट इज बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस, and 5,000 for others. So from 1st April 25 से 50,000 हो जाएगा 1 lakh and 40,000 हो जाएगा 50,000 and 5,000 हो जाएगा 10,000 लिमिट. सेक्शन 194 डिविडेंड टू इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स. अभी जो लिमिट है टीडीएस डिडक्शन का अप टू 5,000, बट फ्रॉम 1st April 25 से 10,000 हो जाएगा लिमिट, थ्रेशोल्ड लिमिट. Section 194K, income from mutual fund units or specified company. Present threshold limit is 5,000. Proposed limit is 10,000. Winning from lottery, crossword puzzle, section 194B, and winning from horse race, section 194BB. Current जो threshold है एग्रीगेट में पूरा साल में जब आपका विनिंग फ्रॉम लॉटरी 10,000 एक्सीड होता है देन आपको टीडीएस कटता है. बट फ्रॉम 1st April 25 से सिंगल ट्रांजैक्शन जब 10,000 एक्सीड होगा देन आपका टीडीएस कटेगा. ओके, सो एग्रीगेट अमाउंट जो 10,000 था ड्यूरिंग द होल फाइनेंशियल ईयर वो हो जाएगा 10,000 पर सिंगल ट्रांजैक्शन. नेक्स्ट इज सेक्शन 194D इंश्योरेंस कमीशन 15,000. करंट थ्रेशोल्ड लिमिट इज 15,000. प्रोपोज्ड लिमिट इज करंट लिमिट इज 15,000 हो जाएगा 20,000. सेक्शन 194G कमीशन प्राइस ऑन लॉटरी टिकट्स 15,000 है करंट लिमिट हो जाएगा 20,000.
commission or brokerage, section 194H, current threshold limit is 15,000, from 1st April 25 से हो जाएगा 20,000. Rent, section 194I, current limit is 2,40,000. When total rental amount exceeds 2,40,000, then आपको TDS डिडक्ट करना था, but from 1st April 25 से हो जाएगा 50,000 per month or 6 lakhs per annum. ठीक है. Section 194J, professional and technical services. Section 194J, current present limit is 30,000, from 1st April 25 से हो जाएगा 50,000. Section 194LA, enhanced compensation on compulsory acquisition, current limit is 2,40,000, हो जाएगा 5 lakhs. Next is और कुछ next is section 194A जो है, it is proposed to increase the threshold for requirement of TDS for requirement to deduct tax at source in section 194A. Okay, from 1st April 25 से section 194A का कुछ threshold limit भी change हो जाएगा. जैसे a banking company to which the Banking Regulation Act current limit is 40,000, from 1st April 25 से हो जाएगा 50,000, and senior citizen का current limit is 50,000, हो जाएगा 1 lakhs. Cooperative society के लिए 40,000 है current limit, हो जाएगा 50,000, and senior citizen 50,000 हो जाएगा 1 lakh. On any deposit with post office under any scheme framed by the central government, 40,000, 50,000 and 50,000 हो जाएगा 1 lakh. And any other case 5,000 हो जाएगा 10,000 and 5,000 हो जाएगा 10,000 for senior citizen also. And cooperative society के लिए 40,000 हो जाएगा 50,000, 50,000 हो जाएगा 1 lakh. ओके, सो ये था कुछ चेंजेस जो एप्लीकेबल होगा फ्रॉम 1st April 25 से. सो होप यू अंडरस्टूड गाइस. एंड अगर आपको सीरियसली TDS एंड TCS सीखना है फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल, then you can join my TDS mastery course with practical training. Okay, इसका प्राइस है 1,999, बट फॉर फ्यू डेज जो ऑफर प्राइस है 999. सो अगर आपको TDS एंड TCS सीखना है, यू कैन ज्वाइन द कोर्सेज. आफ्टर ज्वाइनिंग द कोर्स यू विल गेट 100+ रिकॉर्डेड वीडियोज. जो फ्यूचर में अपडेट आएगा मैं अपलोड करता रहूंगा ड्यूरिंग दिस विद इन दिस कोर्स, एंड लाइफ टाइम एक्सेस एंड लाइफ टाइम सपोर्ट थ्रू टेलीग्राम ग्रुप. मतलब आफ्टर ज्वाइनिंग द कोर्स जो भी आपको क्वेरीज होगा, प्रॉब्लम होगा ऑन TDS एंड TCS, आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करना है, देन आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जाएगा. एंड ये जो आपको ऑफर मिलेगा एंड ये जो आपको सपोर्ट मिलेगा फॉर लाइफ टाइम. ओके, सो फ्री में यूट्यूब में फ्री में वीडियो देखकर यू कैन ग्रो, यू कैन लर्न TDS एंड TCS प्रैक्टिकली. अगर आपको जेन्युइनली सीखना है देन आपको कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, एंड ऐसे कोर्स ज्वाइन कीजिए जिसका आपको सपोर्ट मिले. ओके, बिकॉज नाउ-अ-डेज सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर किया 7 डेज के अंदर आप कंप्लीट कर सकते हो, बट यू कैन टेक एज पर योर कन्वीनियंट टाइम, जिसमें पूरा TDS TCS बेसिक्स है, TDS एंड TCS फंडामेंटल, TDS रेट, TDS पेमेंट थ्रू चालान, ड्यू डेट. ओके, ड्यू डेट फॉर TDS रिटर्न, TDS रेट्स, TDS ऑन सैलरी, एंड पूरा बेसिक से है. एंड यहाँ पर मैंने जो TDS रिटर्न फाइलिंग यूज किया सॉफ्टवेयर, एक NSDL का एक है फ्री सॉफ्टवेयर और एक है पेड सॉफ्टवेयर. ओके, सो TDS रिटर्न फाइलिंग फॉर अदर देन सैलरी, मतलब वेंडर्स, रिटर्न फाइलिंग फॉर सैलरी, TDS रिटर्न फाइलिंग टू NRI, TDS का जो पोर्टल है TDS का. ओके, हाउ टू डाउनलोड ट्रेसेस यूटिलिटी, how to download the justification report, form 16, form 16A, TCS return filing for sale of goods. Okay, how to request form 16, form 16A, TCS certificate, how to trace TDS का जो पोर्टल है, traces overview, हम लोग traces का थ्रू क्या क्या कर सकते हैं. Okay, how to file revised return or correction return in various situations. ओके, सो सब कुछ मैंने इस कोर्स के अंदर ऐड किया. एंड इफ यू ज्वाइन TDS मास्टरी कोर्स यू विल गेट अ बोनस ITR रिटर्न फाइलिंग कोर्स. ओके, ITR रिटर्न फाइलिंग कोर्स, इफ यू वांट टू लर्न ITR रिटर्न फाइलिंग फॉर ITR 1 to 6, तो ये भी कोर्स के अंदर इंक्लूड है. एंड टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू आई विल गिव यू लाइफ टाइम सपोर्ट. ओके, सो ये जो ऑफर है 999 का कुछ दिन के लिए है. सो अगर आपको इफ यू वांट टू लर्न प्रैक्टिकली then you can join. For that you have to go to my website hamidsmalllearninghub.com and you have to join the courses from here.
ओके, कोर्स ज्वाइन करने के बाद तुरंत कोर्स आपको मेल में चला जाएगा। वो सबको यूजर आईडी पासवर्ड देके ओपन करना है। मेरा जो एलएमएस सिस्टम है, एलएमएस सिस्टम से आपको सीखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, एंड ये आपके पास लाइफ टाइम के लिए रहेगा, एंड आई विल गिव यू सपोर्ट थ्रू टेलीग्राम ग्रुप। ओके गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे सो लाइक एंड शेयर जरूर करना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।